Hello students, Assalamu alaikum. Today we will be taking start of our new chapter that is cloning of gene. This chapter is biotechnology and it's chapter number 26. As you can see in this slide, gene cloning is the act of making copies or clones of a single gene. Means if we have a chromosome, on the chromosome we don't have the genes all over the chromosome. Some of the part of the chromosome has exon and some of it has introns. So we will first of all select the place where gene is located, and then we will take a gene, recognize that region, and then we will work on that required gene. So once a gene is identified, the clone can be used in many areas of biomedical and industrial research. So it means that with the help of required gene, we can make a product, we can make medicine out of it. For example, the insulin, which is used as an injection for the diabetic patients, that insulin is produced by the biotechnology techniques. So first of all, there are two major possible ways of gene cloning. Number one is recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is actually the joining of the DNA molecule from a different organism, two different organisms. One is donor and other is recipient, and we will insert that gene into the host organism, and then we will obtain a genetic recombinations or genetic combinations. First of all, in board exams and in MCQs, they usually frame a question like what is vivo and what is in vitro fertilization, or what is vivo. Actually, vivo is a term which is related with the procedure which is taking place in the laboratory. Okay, this is an in vivo method which is used when gene cloning is required at industrial stage and involves selection and isolation of the desired gene. We will isolate it, we will separate the desired gene, the gene of interest, which is also called the gene of interest. For example, we are interested in the insulin gene, we will target it, we will find out the place where it is located, and then we will select, separate, and then the desired gene is obtained. For this, in biotechnology, we will first of all use the vector. We will use some molecular scissors and so many other things for this procedure, and we will study it in stepwise. So here first of all we will select a gene and isolate it, and the transformation of a suitable host by the recombinant DNA. In order to achieve the task, following components or tools, as I have told you, we have to use the tools or the components for that procedure. First of all, the gene of interest, molecular scissors, molecular carriers or vectors, molecular glue, and expression system. So the gene of interest में आपके पास आ जाएगी कि आपने कौन सी जीन को क्लोन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, फिर आपके पास कुछ ऐसी एंजाइम्स होंगे जो एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स एक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं, कैरियर्स हैं जो एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर यूज किया जाता है, जो कैरी करता है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को. मॉलिक्यूलर ग्लू मीन्स सम ऑफ द एंजाइम्स आर एक्टिंग एज अ ग्लू, जैसे हमने लाइगेज में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में हमने लाइगेज एक्टिविटी पढ़ी थी. एक्सप्रेशन सिस्टम, so the selection and isolation of the desired gene. First of all, हम क्या करेंगे, select करेंगे. So artificial gene synthesis, it is the process of synthesizing a gene in vitro without the need of initial template DNA sample. DNA synthesizers are the machine used to synthesize artificially the gene of interest. DNA synthesizer can create a specific DNA molecule of a desired sequence of nucleotide, but this method is useful when the small sized gene is to be synthesized because it is costly method. So some of the machines are synthesizing the DNA artificially. We don't want an initial DNA template. So this is the artificial procedure. It will make a DNA copies, and it is a little costly, but the thing is कि हम यहाँ पर किसी DNA के टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, जस्ट मशीन जो है इसको कॉपी करेगी. Synthesis from the messenger RNA. Gene of interest can also be obtained by synthesizing it from its messenger RNA. Synthesis of gene from messenger RNA is carried out by reverse transcriptase. They usually frame as a question in MCQs, that is, what is reverse transcriptase?
It means that the synthesis of gene from messenger RNA is carried out by reverse transcriptase enzyme, which are naturally found in the retroviruses. Okay. This is also an in vitro process. The DNA formed by this process is called the complementary DNA, the cDNA. Now, what are the molecular seizures? In most of the cases, the gene of interest is directly cleaved from the chromosomal DNA by using a particular DNA seizures, which are called the retroendonucleases. Okay. So the molecular seizures यहाँ पर जो यूज हो रही हैं restriction endonucleases, ये क्लीव कर देंगे phosphodiester linkages को both the strands of the duplex DNA within a stretch of just a few bases. Several thousand different restriction endonucleases have been isolated, which is collectively exhibit a few hundred different sequence substrate specificities. Natural restriction enzymes are found in bacteria where they appear to serve as a host defense role because they chop and inactivate, restrict the DNA of the infecting virus. यहाँ पर आपके पास DNA में जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं बैक्टीरिया में जो उनकी उसको डीएनए के रिक्वायर्ड पीसेस को चॉप कर देते हैं या क्या कर देते हैं, उनको हम कहते हैं कि दे आर एक्टिंग एज अ मॉलिक्यूलर सीजर. बाय कन्वेंशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नेम आफ्टर देयर होस्ट ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम. फॉर एग्जांपल, अगर इको R1 से हमने आइसोलेट किया है तो हम उसको इको R1 कहेंगे. इकोलाई से अगर हमने आइसोलेट किया है, अगर हमने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या ज़ेंथोमोनास होलिकोलाई से किया है, हॉल्सिकोलाई से किया है, तो उसको हम हेंथ 2 एंड हेंथ 3 कहेंगे. राइट. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं किन के ऊपर नेम रखे गए, उनके ऑर्गेनिज्म जहां पर ये प्रेजेंट हैं उसके नाम से हमने एसोसिएट कर दिया. इको R1 हमने इकोलाई से ऐसे एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इको R1 में प्रेजेंट होंगे, इकोलाई में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. द सबस्ट्रेट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड द रिकग्निशन साइट्स और रिस्ट्रिक्शन साइट्स. दिस क्लीव ऑफ phosphate group on the 5' end and hydroxyl group at the 3' end of the both strand. The restriction enzymes used in the molecular biology lab cut within their restriction site and generate on different types of the ends. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 overhangs. 5 overhangs का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने restriction endonuclease, ये रेड एरो आप देख रहे हैं, ये शो कर रहा है कि यहाँ हमने क्या किया है, कटिंग की है मॉलिक्यूलर सीजर्स ने. तो हमारे पास क्या क्रिएट हो गई, 5' ओवरहैंग्स क्रिएट हो गए. अब यहाँ पर देखिए 3' से कटिंग किए तो हमारे पास 3' ओवरहैंग्स क्रिएट हो गए. तो ये आपने इसमें ये जो यूज किया गया है BAM-H1 जो है, ये भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसके नाम पर हमने ये नेम रखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का. KPN1 जो है, ये भी एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से लिया गया है. So the blunt ends enzymes that cut at precisely opposite sites in the two strands of DNA generate the blunt ends without overhangings. S small is an example of enzyme that generate blunt ends. The 5' or 3' overhangs generated that cut asymmetrically are called the sticky ends or cohesive ends because they will readily stick or anneal with the other partner of the base pair. Because of this property, they are usually used in recombinant DNA technology. Now, what are the molecular carriers or vectors? Vectors or another are the major components required to make a recombinant DNA molecule for a gene cloning. Vector act as a vehicle for the carrying foreign DNA into a host cell for multiplication. Usually small circular DNA molecule of the bacterial origin are used. Now let's see. यहाँ पर क्या किया गया है, हमने एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया. मैंने आपको हमेशा से कहा जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. सिलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स आर एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड. द मोस्ट कॉमन मार्कर्स यूज्ड फॉर द सिलेक्शन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. व्हेन द जीन आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इट विल बी रेजिस्टेंट टू अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक. फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रेजिस्टेंट टू द एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक. सो हियर इज द रिस्ट्रिक्शन, here is the origin of replication, and here are the primary sites, restriction site, inserted gene. और यहाँ पर ये क्या है, आपके पास selectable markers हैं और ये antibiotic resistant gene. Multiple cloning sites or polylinkers. A vector should have a site specific for cloning for the foreign DNA fragment provided within the restriction site for most of the commonly used unique restriction endonucleases. All these unique restriction sites are grouped together in a small region of vector known as multiple cloning sites or the polylinker. The presence of unique restriction site at MCS gives flexibility in the choice of restriction enzyme. कह रहे हैं कि आपके पास एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स हो सकती हैं एक बैक्टीरिया के अंदर.
फिर बता रहे हैं कि रिलेटिवली स्मॉल वेक्टर्स आर मोर डिजायरेबल। वेक्टर्स जो होते हैं उनका साइज अगर छोटा है तो वो उनको सिलेक्ट किया बिकॉज दे इंक्रीज द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी एंड मल्टीप्लिकेट, मतलब मल्टीप्लाई जल्दी होते हैं, मैनिपुलेट उनको इजीली किया जा सकता है। लार्ज एक्सटर्नल डीएनए फ्रेगमेंट कुड नॉट बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लाज्मिड। जहां जिस जगह प्लाज्मिड क्या है कि एक सर्कुलर डीएनए है जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। स्मॉल साइज आल्सो help purification procedures to obtain intact plasmid. A large number of vectors with the above characteristic have been developed. There are 6 different types of cloning vectors commonly used in recombinant DNA. So PBR322 is a vector which is used, which is also called as carrier. So it is the plasmid can be used as vector which are derived mostly from the bacteria and are most widely versatile and easily manipulated one. The natural bacterial plasmid could be modified to produce new plasmid like PBR322. The P stands for the plasmid, PBR Bolivar, and these are the kind of हम कह सकते हैं names for the scientists. This was the first widely used purpose-built bacteria. It has number of origin of replication जो है इसका क्या है कि it carries a fragment of plasmid PMB1 Murray in July 1995 that act as an origin for the DNA replication and that ensures the multiplication of the vector. So here is the size of this vector. Maybe they could ask कि आपके पास PBR322 का size क्या है? That is 4.36 kbs. It means that कि आपके पास यहाँ पर इसका जो size है वो small है. This is important because transformation efficiency is inversely proportional to size and above 10 kilobytes per unit is very low. Thus, there is room in PBR324 interest of least 6 kbps. Okay, so copies जो है ये हमारे पास 15 copies per cell produce करता है. इसमें selectable markers जो है antibiotic resistant genes ampicillin and tetracycline के लिए लिखाई गई है. देखें आप यहाँ पर देख रहे हैं एक tetracycline resistant है और एक ampicillin resistant है. It carries a number of unique restriction sites. Some of these are located in one of the antibiotic resistant PST1. So Polyvidentia strati and Polyvidentia vulgaris, and these are the found in ampicillin and BAM-H1, Bacillus amylolecufins, and Hindi3 in tetracycline. Cloning into one of these sites inactivates the gene, allowing recombinant to be differentiated from non-recombinants, known as insertional inactivation. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी और इनको हमने PST1, PVU1 कहा और BAM1 और Hindi 3 कहा. और मॉलिक्यूलर ग्लू में आपके पास हमेशा ग्लूइंग कैपेसिटी जो है वो लाइगेस की होती है और वो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ली, उसको हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें होगा, उसमें क्या होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स होंगी. उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वहां पर डीएनए लाइगेस अपनी लाइगेस एक्टिविटी से उनके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस को ग्लू कर देगा. Right, so expression system, a suitable organism that can act as a host for the recombinant vector is called the expression system. Therefore, the selection of suitable expression system always depend upon the type of vector which is being used. तो हमने जो वेक्टर लिया था उसको हम कह सकते हैं कि अब जिसके अंदर हमने ये डिजायर्ड जीन ऐड कर दी है वो एक एज अ एक्सप्रेशन सिस्टम एक्ट कर रहा है. तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले ली, वेक्टर ले लिया, कैरियर ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर ली. The first step in the construction of recombinant DNA is the isolation and purification of vector and the DNA fragment containing the gene to be cloned. First, digest the vector DNA plasmid, which is suitable restriction, and it linears with the sticky ends, which is determined by the type of the restriction enzyme used. Right. So next, we isolate the DNA fragment carrying the gene by digesting the genome, the source DNA strand with the same restriction enzyme used for the linearized digested vector and the targeted DNA cut with the strain are incubated together in the presence of DNA ligase. During incubation, the sticky ends of the two DNA stick together. At this point, a phosphodiester linkage is established between them, mediated by a DNA ligase enzyme. This is the formation of the recombinant DNA molecule of a vector and a gene of interest. So here is an example of donor cell, foreign DNA, and bacterial cell.
plasmid vector. Here we took the gene and here we ligate it, ligase enzyme, और यहाँ पर हमने इसको reproduction के लिए छोड़ा तो यहाँ पर इसके clones produce हुए. So this is the formation of recombinant DNA. Transformation of expression system का मतलब ये है कि transformation can be performed by putting the expression system and bacterial into the same medium. Bacterial cell take up the recombinant plasmid, especially if it is treated with calcium chloride to make them more permeable. Thereafter, as the cell reproduce, a bacterial clone form a new cell contain at least one plasmid. Therefore, each of the bacteria contain the gene of interest. So ये क्या करेंगे, अपने पास कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे. हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्सप्रेशन सिस्टम को, हमने और से और कॉपीज प्रोड्यूस कर दी. अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन, द ट्रांसफॉर्म डन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक फॉर विच द रेजिस्टेंट जीन. As the transformed clone has got the resistant against the antibiotic, so it will live. तो हमारे पास हमने कहा था ना कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एरिया भी होगा, तो अगर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एरिया है तो वो अलाइव ही रहेगी क्योंकि वो उसके लिए रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहा है, राइट. Inshallah, we will be studying this topic in the next video, polymerase chain reaction, and that is important technique, and inshallah we will be studying it in the next video. So I hope this topic is clear. If there is any query, you can ask from me, and if there is any question, you can ask me in the WhatsApp group. And यहाँ इसको थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें जो ऐड कर दिए गए हैं आपके पास PBR 322, इसको समझना है आपने, ठीक है.